सो बेटा लेट्स स्टार्ट। आज हम कर रहे हैं जनरल अयूब खान के टॉपिक में लेसन नंबर 3। इससे पहले हम 2 लेसन्स जो हैं वो कंडक्ट कर चुके हैं और उसमें हमने सबसे पहले तो रिव्यू जनरल अयूब खान के टाइम पीरियड का रिव्यू किया एंड देन वी स्टार्टेड एग्जाम क्वेश्चंस। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। The question is, how do you explain Ayub Khan's loss of power in 1969? So yesterday's class, I told you 4 reasons of loss of power of Ayub Khan, जिसको अभी स्क्रीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। जो रीजन नंबर 1 है, बेसिकली अयूब खान was charged of rigging in elections which were held in 1964। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे जिसके अंदर उनकी ओपोनेंट जो थी वो फातिमा जिन्ना थी और फातिमा जिन्ना को सपोर्ट कर रही थी पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक अलायंस बनाया था विच वाज नोन एज कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज। और ये जो अलायंस था ये अयूब खान के अगेंस्ट बना था और इसके अंदर इस इलेक्शंस के अंदर ऑल्दो फातिमा जिन्ना गॉट मेजॉरिटी लेकिन रिजल्ट्स वर चेंज्ड और अयूब खान वाज डिक्लेयर्ड द विनर और उसके बाद ही रिमेन्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन ये इसकी दिस वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ लॉस ऑफ पावर। इसके बाद सेकंड रीजन जो हमने कल डिस्कस की थी वो सेलिब्रेटिंग द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, यानी अयूब खान गवर्नमेंट वाज सेलिब्रेटिंग 10th एनिवर्सरी ऑफ हिज 10th एनिवर्सरी इन 1968। लेकिन इसी टाइम के अंदर देयर वाज 2 मेजर प्रॉब्लम्स। वन वाज acute shortage of drinking water in Karachi और दूसरा जो क्राइसिस था वो शुगर क्राइसिस था which was going through whole of the country। लेकिन इसकी वजह से लोगों के अंदर ये डिसइल्यूजनमेंट जो है वो ग्रू हुई क्योंकि although the government is celebrating the year of prosperity लेकिन actually we are facing different types of problems। इसके बाद जो थर्ड रीजन हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की थी वो थी बेसिकली एजिटेशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अंदर हमें ज्यादा नजर आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाज इन वेस्ट पाकिस्तान, जिसके अंदर स्टेटिस्टिक शोज दैट के जो मेजर शेयर है वो यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है वेस्ट पाकिस्तान में। इसकी वजह से देयर वर रिजेंटमेंट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट विंग। फोर्थ जो रीजन हमने आपके साथ डिस्कस की थी वो आपका था देयर वाज अनरेस्ट इन लेबर क्लास बिकॉज अयूब खान बैंड लेबर यूनियंस। इसकी वजह से जो लेबरर्स थे उनका ख्याल ये था कि उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। So that is why in last days of Ayub Khan's time period, the jobless youth and the labor class became against him और इस वो इनके इस जो sentiments हैं उनको use किया Z.A. Bhutto ने and he launched a very popular movement against Ayub Khan। ये 4 रीजन जो हैं ये क्लास के अंदर हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त जो आज का लेसन है इसके अंदर मैं रीजन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। सो यू कैन राइट इन योर कॉपी रीजन नंबर 5 यानी फिफ्थली द इमेज ऑफ अयूब खान was also damaged by the money making activities of his kinsmen यानी उनके relatives जो थे and those who enjoyed his protection and patronage। For example, his son Gohar Ayub got an early retirement from the army and along with his father-in-law General Habibullah Khan
entered business, and within a short span of time, the two became the top business tycoons of Pakistan. Though Ayub Khan was in knowledge of this, but willingly or unwillingly, he allowed his name to be used. Sixthly, Ayub Khan's government efforts to modernize the society by the introduction of liberal and progressive social reforms had antagonized the conservative and orthodox religious sections of the country. The close advisor of Ayub Khan had kept him in the dark about his declining popularity. It was reported that he was loved by the masses, and for his revolutionary reforms, his name would go down in the history as Second Ataturk. Ataturk, you must be familiar with the name of Ataturk because he was the person who initiated to introduce democracy in Turkey. ठीक है, खिलाफत movement के हवाले से you must know this name. However, Ayub Khan became conscious of his unpopularity and dissatisfaction against him when an unsuccessful assassination attempt was made at his life in Peshawar in 1968. Lastly, the general impression given to the people of Pakistan after the 1965 war was that Pakistan had won, but when Pakistani troops were withdrawn from the occupied Indian territories after the Tashkent Declaration without any solution to the Kashmir issue, a disillusionment grew among the masses that Ayub Khan had surrendered at Tashkent what the army had gained in the battlefield. Later on, Zade Bhutto cashed this disillusionment during his mass movement against Ayub Khan, which eventually brought later's downfall in 1969. Right? So now we have completed question number 9. Question number 10, what was the Green Revolution? I have given you in homework. Question number 11, describe the features of 1962 Constitution. These two questions, if you are going to attempt, you can easily find information in lesson number 1, which I have uploaded. ठीक है, General Ayub Khan lesson 1. All information are given related to
these two questions. So you can easily attempt these questions as well. अब मैं थोड़ा सा आपको review दे देती हूँ कि total we have done 9 exam question on General Ayub Khan. ठीक है, और ये हमारा जो थर्ड लेसन है, इसके साथ ही हमने वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, जनरल अयूब खान का टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड. हमने अपना जो एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, वी स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन 1 व्हिच वाज व्हाई डिड जनरल अयूब खान डिक्लेयर मार्शल लॉ इन 1958. अब यहाँ पर मैं रिव्यू आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि इफ यू स्किप एनी क्वेश्चन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. You can also listen recording of lesson 1 and lesson 2 as well, and please complete all this work. ठीक है, ये सारे questions. So question number 1 and then question 2, how did Ayub Khan achieve power? Again 7 number. And question number 3, why did Ayub Khan come to power in 1958? Again 7 number. Although these are 3 questions with different wording, but the answer is same. ठीक है? Then comes on question 4. Question 4, how did martial law 1958 affect Pakistan politics? Question number 5, explain why Ayub Khan called the year 1958 to 69 the decade of progress. Again 7 number. I have given the year as well. जो आपके जो past papers के questions हैं different years के अंदर पूछे गए हैं. Question number 6, Ayub Khan's agricultural reforms were more successful than any other of his domestic policies between 1958 to 69. Here the keyword is used, do you agree or disagree? Give reasons for your answer. ठीक है. I also told you the requirement of this keyword, यानी जब आप ये question attempt करोगे तो what would be the format of your answer, ये मैंने lesson number 2 के अंदर आपसे discuss किया हुआ है. So you can listen the recording, तो आपको इसके बारे में बहुत clear information भी मिल जाएगी. So you can attempt the next question easily. Then comes on next question number 7, constitutional reforms were the most important of Ayub Khan's domestic policies during the decade of development between 1958 to 69. Do you agree? Give reasons for your answer. This question was given to you in homework, so you have to do it yourself with the consultation of all the information provided by you. ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर attempt करें. Then what were the basic democracy's order? And number 9, how do you explain Ayub Khan's loss of power? And then number 10, what was the Green Revolution? And question 11, describe the features of 1962 Constitution. So in this way we have completed topic General Ayub Khan. I provided you information about his reign, and we have also completed all exam questions. So you can prepare for your CAI exam in a better way.